A very good morning to everyone and a warm welcome. What a fresh day, absolutely. Little bit of moisture we can see, a little bit of fog as well. Toss won by MCC Dragons and opted to field first. And they have invited MCC Stallions to bat first. So from the far end, it's a Sudesh Prabhudesai on the bowling mark will be bowling to Kapil Angle, who's on the striking position. On second end is Munamai Das alias Manu. Here comes the first delivery. Flight at low, full toss in the ball. Played straight to the mid-off region for a single. He gets off the mark. So Kapil gets off the mark with a single, low full toss and played straight to the mid-off. And now it's Murmai Das taking his guard, marking his line. It's a good left-hand, right-hand combination right from the beginning for MCC Stallions. So yes, a little bit of warm up there for Murmai Das, and he's ready to face the first delivery. Around the wicket this time, Sudesh Prabhudesai. Oh, coming down the track. Oh dear. He's gone the very first ball coming down the track and the ball right onto the stumps, and Murmai Das is out on a duck. What an absolutely disappointing dismissal here for Murmai Das. The very first delivery he went down the track and he's been wrapped up. So he's returning back without scoring a single run. That is a bad luck, I would say. And Naval Naik is launching himself in as a one down batter. So what a first breakthrough, absolutely wonderful. He'll be rejoicing in the very first wicket, watchfully played by Naval Naik. And this is exactly how you need to start initially. You have to wait for the ball to come up to the bat and then play, and you will get a judgment if you can spend some time out there. That is exactly what these two should do. Spend some time out there, get used to the situation. Oh, lovely shot on the back foot. The ball is up in there. There's a fielder getting underneath it. And the ball is just falling short of him. That could have been another wicket for sure, as the ball was right up in the air for a long time. If the fielder was not in deep, long on, that would have been an easy catch for sure.
So what a wicket-taking bowler that he's turning out to be once again. Now right arm over to Kapil Angle. Nicely done. Just a little bit of wrist. The ball deviating down the leg side, and a wide call, the first extra here of the day. And a very good morning to all the listeners. You're listening to Nadeem Ahmed, sometimes in English and sometimes in Hindi. I'll be keep entertaining you throughout the day. There's 2 matches to be played today, as usual. This is Margaon Cricket Club Members Cricket League Season 9 2023. So soon we will be entering into the 2024. Just few days to be precise, 14 days away. Or 15 days. In the meantime, good sweep shot, good sound as well from the bat, but straight to the field in the square leg region. Nicely fielded, just restricted the batters on one, and that has marked the end of the very first over. After the completion of first over, the score is 4 runs for the loss of 1 wicket. So Amlon D'Souza from the far end to begin the second over, and facing him would be definitely very talented ex-Ranji player Kapil Angle. Oh, very quick ball, deviation, the ball in the leg side, could be a couple of runs here. 2 runs easy, one as wide, another one as a single taken between these two. What a good combination once again, left hand, right hand. Continues to puzzle the fielding side. As you can have a look at the fielding side once again, a lot of changes been brought because now the left-handed batter Naval Naik has gained the striking position. So the bowler goes around the wicket in between the umpire. So a lot of changes, making sure the fielding is been intact and in place for Naval Naik. As Naval Naik, we know he's a good lofted hitter. Coming down the track inside edge. Oh, that was a very quick response from Naval. Not allowing the bowlers to settle down. Quickly wanted to surprise Amlon, but not good timing this time. But this two continues to contribute with singles and twos. So this is good going now for the batting side after the fall of the very first wicket. The very second delivery, Murmai Das was clean bowled by Sudesh Prabhudesai in the very first over. On the back foot, beautifully angled it so nicely, elegantly. Absolutely a quality play that he is to watch. Kapil Angle, he always, as we know, a very consistent performer. Will definitely contribute at least a minimum of 35. If things go well, he can come up scoring 40 because he's got that ability. Calm, cool, very talented. Just allows the ball to come up to the bat and plays his stroke and just get going with the singles and twos. That is exactly how the style of batting of Kapil Angle is. In the meantime, just wanted to now he wants to have a cap instead of the helmet. Naval Naik. The ball is up, and this time will go past the field. Could be a couple of runs, or maybe the ball might just race away to the fence. So in the meantime, yes, this is absolutely good running between the wickets. 3 runs taken.
What a good shot. This is the beauty of the power play. It was a 4. The fielder was way inside the circle and watchfully played. Good placement from Naval Naik to get that 3 runs. As Naval Naik is playing on 5 and Kapil on 3. Just trying to be a little bit cautious and careful. But they have started to contribute. Good looking drive. Should be a couple of runs. Once again, the ball might just beat the fielder there. Yes, 2 runs. Easy picking up. This is the final delivery of this second one. The score is moving up to 13 now with the help of these 2 coming from Kapil Angle, driving it straight into the extra cover region. Nicely done, a little bit of risky work, and that dot ball will mark the end of 2 overs. It's 13 for 1. MCC Stallions batting first. So to begin the third over, it's once again Sudesh Prabhudesai from the far end. Oh, coming down the track. Oh, good hit. There is a fielder there. And straight to him. He made the similar kind of a mistake in playing the very first over, and now bit of more bad on that, and he finds the fielder. And what a good catch taken by Sandeep Dalal in the mid-wicket region. And the second wicket goes down of MCC Stallions on a total of 13 runs. On the back foot, and the new batter is Amit. Once again, he's a left-hander, so the combination will definitely continue with left and right hand. Right from ball number 1, it was Murmai Das, later it was Naval, and now it's Amit, the left-hander. Nicely played, but straight to the field, and a chance of a single.
It will take some time to get off the marker. The new batter at number 4 is Amit. What a beautiful catch taken by Sandeep Dalal right in the deep mid-wicket region. Down the throat, right in his abdomen. And the fielder has digested the delivery with Hajmol. In the meantime, good looking drive from Amit. The ball will beat the fielder for sure. Long on region, fielder will not get to the ball as Amit gets off the mark in style with a beautiful boundary coming down the ground. Oh, inside edge, and that will be a single nicely done by Amit. Someone should be there to give this kind of support which is needed for Kapil Angle. In the meantime, it's the end of 3 overs. What a wonderful over once again. Picked up a wicket by Sudesh Prabhu Desai. End of 3 is 18 for the loss of 2. In the meantime, another single here. Amit is showing some good sign of batting. Definitely, he's in form with that boundary. Definitely has boosted his confidence sky high. He looks like that he's going to stay there for some time and give a kind of support which is needed for Kapil Angle. They definitely need a partnership here. MCC Stallions. In the meantime, little bit of adjustment here. Look at the wall of fielders there in the covers. A lot of fielders. Shot third man. There's a gully point cover, extra cover, who is forward and mid off. And the lining is absolutely beautiful from Sudesh Prabhu. I beg your pardon, Amlon D'Souza on the bowling mark. Look at almost now 6 fielders in the offside. And if you talk about the onside, there's a long on, there's a fielder in the square leg, and there's a fielder in the deep mid wicket. Beautifully cut away, pierced the line, and the ball might be just pulled back right on the edge of the boundary. And yes, it got stopped because of the thick grass out there. By the time the fielder picks up and throws 2 runs, 3 runs easily picked up by Kapil Angle, and this 3 will take the score to 22. This is good runs contribution, and now look at that quickly. The left-hander gains the strike, so Zamir Karul has to do a bit of exercise here as he has to run from one end to the other. It's better that the fielder knows their position for both the batters, left hand, right hand. In the meantime, Amlon D'Souza once again ready from the far end into the bowling proceedings in the 4th over. Nicely worked with the wrist. So, very risky worker, Amit. And what a good way to contribute into the runs. Definitely is doing a good job out there. Every single rotation of the strike, there has to be change in the fielding. So as I said, the fielder has to know their position for both the batters. Amlon D'Souza to Kapil Angle on the back foot. Beautifully cut away into the covers. One-handed pickup and the shy on the stumps, but a comfortable single here for both these batters. Lush green grass and no sign of sun. Dull climate out here because of the fog. And as the winters, as we can feel the chill of winters, and nowadays definitely getting very chill mornings, cold atmosphere, and definitely the sun will
shine brighter later on maybe. Nicely done, beautifully worked, but straight to the field and a chance of a single. Even that has brought an end to the fourth over, 24 for 2. So after the completion of 4 overs of the power play, it's changing the bowling from the far end. Sandeep Dalal into the bowling proceedings. Good looking drive, lovely swing of the bat. 2 should be easy, and yes it is. Kapil Angle, absolutely wonderful striker, has been informed to you all that he is one quality batter to see. He's got all those shots, you name it, and he has it in his kitty bag. Name is Kapil Angle, former Goa Ranji, very talented player, a specialized batter that he is to watch. Sandeep Dalal, once again, beautiful cover drive. Look at that beauty. This time in the gap, the ball might just race away to the fence. Oh, but will be pulled back by the batter. And once again, in the meantime, 2 runs easy picking up here for Kapil Angle. Back to back. Just a drive and 2 runs. Now since the fielding is played, what you see, 5 fielders now to stop those boundaries right on the edge of the boundary. In the meantime, that was a good variation from Sandeep Dalal. A pitch delivery, a slight bit of an extra bounce has surprised Kapil Angle. He's quickly taken his bat off. The variation what works for the bowler, and this is one good move from Sandeep Dalal in the 5th over. Just focusing on the variation now. Once again, beautiful drive. Look at that, how elegantly he plays that. Effortless. A single, slowly taking the score up to 29 runs. Look at the ground staff is absolutely putting in their hard effort, and now as you can see, a little bit of more brighter as the sun is slowly but surely will come out. And the dampness and the moisture will slowly disappear. One among the most beautiful grounds of Goa, MCC, and the match has been played between MCC Dragons versus MCC Stallions. Batting first is MCC Stallions. A little bit of change in the fielding, the mid-wicket region. The deep fielder has been brought back into the circle for Amit. Nicely guided the ball towards the point for a single. This is absolutely showing the kind of maturity which is needed, and that single has marked the end of 5 overs. 30 for 2.
So change of sides from the Rajesh Godge pavilion and into the bowling proceedings. Prakash has been brought into the bowling proceedings. Straight away single from Amit. Jaiprakash Kunde into the sixth over and score has gone up with the help of Amit to 31 for the loss of 2. Murmai Das returning back without scoring and Naval Naik on 5 took a lofted shot but only to find a fielder in the deep mid wicket reach and the fielder making no mistake in grabbing that catch. Sandeep Dalal loud shout and confident appeal. I think they have now the third wicket and yes, Kapil Angle is walking back. What a good work from Saish Mahamre, the wicket keeper. Oh boy, you beauty. He's been quickly stumped. Maybe the leg was slightly in front. As Kapil did not drag the foot back to the crease in time. But what a sharp work there from Saish Mamre. Absolutely wonderful to get that quality batter out. Kapil Angle was batting on 14 and was looking so good. Beautifully stumped by Saish Mahamre. Quick work by Saish Mamre behind the stumps on the bowling of Jaiprakash Kunde, and this team has taken the wicket of Kapil Angle, who was batting so good on 14. New batter is Nihal Borkar, the match winner. Lot depends on this particular batter as he's capable of contributing a lot of runs. White signal in the meantime, and this has taken the score to 32. So far, 3 wickets down. Manu on a golden duck. Naval Naik on 5 and now Kapil Angle on 14, stumped beautifully by Saish Mahamre. So this is turning out to be a good over from Jaiprakash Kunde, the new change from the pavilion end. And what an effective over this is turning out to be. Absolutely wonderful. The beauty of the Dragons is they're picking up the wickets every regular interval and pushing the batters back to the back foot. Good looking drive from Amit. He continues to play his natural, young talent. Lovely drive towards the covers and straight to the field. Slight a bit of a fumble there has made a comfortable single for Nihal Borkar. And the combination will continue between these two, left hand, right hand. The Dragon fielders are having a tough time for sure with this kind of a combination. Till the time Amit is there, they will have to just keep changing the field. From the pad, that would have missed leg stump by a big margin for sure, and that has marked the end. A wonderful over comes to an end. 6 overs gone by. It's 35 for the loss of 3.
having a good chat, and Samir Karol has been brought into the bowling proceedings. To begin the seventh is Samir Karol from Rajesh Godge Pavilion, and score 35 for 3. Slice it loud shot, confident appeal from Sai Shumambre. Once again, he goes up in excitement. But no, says the official umpire Sandesh Gaonkar alongside Prashant Patil in the square leg. The very first delivery, that too. What a confident appeal. That must have shaken the foundation of Nihal Borkar. On the back foot, virtually played with the full face of the bat. He's a new man. Will definitely take some time to get set. And we all know once he gets set, he will start to go after the ballers. Is that kind of a ruthless batter to watch? Or should be a couple of runs here. Nihal Borkar. Yes, he says, and easily they will get it. Pushing hard for 2 and getting it easily, and that's the beauty of Nihal Borkar. In the previous match, also he had contributed quite handsomely, and once again it's time for him to contribute because they have lost already 3 wickets, and someone is required to stay there and continue getting some runs, forming a good partnership. Drive gentle for a single, straight to Sandeep Dalal. He's been regarded as Javid Miandad of MCC, but wonderful play that he is. All-rounder performer, complete package for T20. Sandeep Dalal, good with the ball, good with batting, excellent on the field. What more the captain want than this? Sudesh Rani, the captain of MCC Dragons. Govind Gavas is the captain of MCC Stallions. Govind Gaonkar, correction. And Zamir Karol is known to bowl those arm balls quite well. He's an arm ball specialist. Oh, the ball is up and straight to the fielder. Absolutely unfortunate dismissal. This is the top edge, and Amit is out. Samir Karol providing that particular wicket, and Amit is out on 10. That's the reason we say the game of cricket is all about uncertainty. You never know what can happen in the game of cricket. So 4 wickets down on a total of 39 in 6.5. What a good overs coming from this end. That is a pavilion end. The very first from Jayaprakash Kunde picked up a wicket off the very talented Kapil Angle, beautifully stumped by Sai Mamre, and then in this second over, that is the 7th over, Zamir Karol picked up a wicket caught by Malon D'Souza and bowled by Zamir Karol. Wicket of Amit, who batted and contributed 10 runs.
for his team. The fielding captain on the field is Sandeep Dalal. Last ball. Paul Fernandez is a new batter, right on strike. Watchfully played. Good over from Zamir Karol. End of 7. It's 39 for 4. Now a lot depends on these two, Nihal Borkar and Paul Fernandez. After the wicket fall of Munmay Das, Naval Naik, Kapil Angle and Amit. Good looking drive, should be a couple of runs or maybe just one. Ambulance is so very quick on the ball, deceiving the plans of 2 runs from Nihal. And what one thing we have noticed is under pressure, he comes up with the flying colors, Nihal Borkar. Once again showing the character, absolutely, which is needed now. Staying calm, cool, composed, and playing naturally. Singles and twos from the pad, and that would have missed a leg stump appeal there from Jayaprakash Kunde in the 8th over. It's Paul Fernandez without a cap, without a helmet, just warming up a bit because he's a newcomer after the fall of Amit on 10. Across the bat this time, could be a quite close. That was a good shout from Jayaprakash Kunde. It's a lucky survival here from Paul Fernandez. He was right in front and maybe the height has saved him. Played across the bat, missed it completely. A slightly bit of a rise there has saved him. Otherwise that would have been a plumb out. Oh, right in the block hole, beautifully played away, straight back to the bowler. This is turning out to be another good over from Jayaprakash Kunde. Already 4 balls gone by of 8th over, and the total is just 40, correction. The ball is up and will be safe. That will be just 2 runs. Not out, says the square leg umpire. A quick work once again from Saish Mamre. He's definitely on a footstep of MS Dhoni. A quick stumping, quick run out. It always keep boosting the morale and showing the line and length to the bowlers, keeping himself busy and keeping the batters guessing. He's a great asset for team MCC Dragons. Saish Mamre, advocate that he is by profession. Oh, lofted shot. This is good, but straight to the field in the long off. No mistake. Clean pickup and good return. Just a single to Paul Fernandez. That was a good looking shot. Good soothing sound as well. End of 8, 43 for 4.
Zamir Krul once again to begin the ninth over from Rajesh Godke Pavilion into Paul Fernandez. Off right delivery, all off it shot. The ball is up in there once again, heading towards the long off region for another single additional to the total to take the score to 44. Now they are taking the chances. Paul Fernandez time and again playing those lofted shot, and he knows exactly where he's playing, trying to get the ball there and get some runs and support Nihal Borkar now, who's on strike on the front. Bit of bat and no chance of a single. The ballers have done a wonderful job of Team Dragons. They've kept the line length well, maintained good areas. Nothing have allowed the batter to get into the comfort zone and play some big shots. He keeps on shouting. Saish Mamre keeps on appealing. The best appealing wicketkeeper of this tournament, Saish Mahamre, very active, very energetic behind the stumps. Coming down the track and once again just trying to play it away. With a game plan and a strategy in his mind, Nihal Borkar just trying to work it out. Just sliced it beautifully, but straight to the field and a chance of a run. A good call there from Paul Fernandez, and this over is turning out to be absolutely wonderful over from Zamir Karol and Jay Prakash Kunde. These two spinners are doing the job from the pavilion end. What a good control of runs, and picked up a wicket as well. Both 1-1 each. On the back foot, this is good looking shot, and once again the ball will be stopped by the mid-fielder. So end of 9, it's 45 for 4. Jayaprakash Kunde once again on the bowling mark in the 10th over, and after this over there will be drinks break. We'll be taking some time out, but definitely heads off to the bowlers right from the beginning. Sudesh Prabhadesai picking up a wicket, and after that Amlon D'Souza. Sudesh Prabhadesai once again picking up another wicket in the second over of his. Of course, Amlon D'Souza did not get any breakthrough. Sandeep Dalal also was not lucky to have a break in the form of wicket, and later on it was Jayaprakash who picked up a wicket. Good stumping there from Saish Mamre. And then Zamir Karol's over. What a fantastic catch taken by Amlon D'Souza to dismiss Amit. White called, extra to the total, 46 on the board. Nicely worked, and play should be 2 here. The first instance is very quick, but heading straight to Sandeep Dalal, one of the finest fielders that we have on the field. Not taking any chances, and rightfully so. Wise decision here from Nihal Borkar. Oh, ball right in the block hole, but watchfully played. Very cautious and careful drive that was from Paul Fernandez into the covers. Oh, lovely shot. The ball has gone past Amlon once again. Very quick on the ball. Should be just 1. Nothing more than that. Look at the agility, the speed of Amlon D'Souza. Wonderful. He knew that
These batters are capable of converting that single into two very quickly, as Nehar Borkar is a very good runner between the wickets. So keeping that in mind, not allowing, and was a successful field from Amlon D'Souza. Will toss once again in the similar direction. Once again, the quickness is as quick as he was in the previous delivery. Amlon not allowing for two. So every ball a single now, and the score is slowly ticking up and nearing 50. It's on stationed on 49. Just a run away to be 50 in the 10th over. It means they're going at the rate of wonderful. Another dot ball here from Jai Prakash Kunde. And this time I don't think so. It is a successful stumping from Saish Mahambre, as the ball wasn't there on his in his gloves, and that has marked the end. 10 has gone, but it's 49 for 4.
captain here, Sudesh Rani, on the bowling mark in the 12th over. तो 11वीं ओवर में निश्चित तौर पर यहाँ पर कप्तान स्वयं अपनी गेंदबाजी लेकर दूर वाली छोर से गेंदबाजी के क्रम में बढ़िया शॉट, लॉफ्टेड शॉट, बिल्कुल गेंद हवा में, मगर सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज पॉल फर्नांडिस, मगर इसी दरमियान एक रन आसानी के साथ जुड़ता हुआ स्कोर के खाते में। सभी दर्शकों को, सभी सुनने वालों को नदीम अहमद की ओर से प्यार भरा नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हु जस्ट जॉइंड अस। उन्हें बताता चलूं कि मैच जो कि ड्रैगन्स बनाम एमसीसी स्टैलियंस के बीच जो कि चलता हुआ, तारीफ करनी होगी, कमाल की गेंदबाजी रही है पहले ओवर से सुदेश प्रभुदेसाई ने। जिस प्रकार से पहली ओवर में केवल 4 रन देकर 1 विकेट की सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए, तब से बिल्कुल विकेटें गिरने का सिलसिला अब तक जारी। कुल मिलाकर 4 विकेटें गिर चुकी हैं, जबकि एक यहाँ पर एक बढ़िया शॉट काफ़ी समय बाद ही सही, मगर सही टाइमिंग से भरपूर निहाल बोरकर के बल्ले से निकलता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रन। तो जिस प्रकार से उम्मीद इस बल्लेबाज से की लगभग 35 रन फिर से एक बार बनाने की पूरी कोशिश करते हुए, जबकि सभी बल्लेबाजों ने जब शुरुआत हुई थी तब मुरली दास ने केवल एक ही गेंद में 0 पर आउट होकर वापस पवेलियन लौटे। उसके बाद नवल नाइक बड़ा शॉट लगाने की फिराक में कैच दे बैठे संदीप दलाल को, उन्होंने बनाए थे 5 रन। उसके बाद कपिल आंगले जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, 14 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद अमित, इस प्रकार से अमित ने 10 रनों का योगदान दिया। 4 विकेटें अब तक कुल मिलाकर गिर चुके हैं। क्रीज पर निहाल बोरकर जो अपनी निजी 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि पॉल फर्नांडिस 9 पर बल्लेबाजी करते हुए। इसी बीच कप्तान सुदेश रानी की गेंदबाजी, वहाँ पर हल्की सी फंबल और मौका बल्लेबाजों के लिए 1 रन बनाने का। केवल 1 ही रन मिल पाएगा क्योंकि फील्डिंग भी काफ़ी तेज, सभी खिलाड़ी काफ़ी अच्छी फील्डिंग के लिए जाने जा रहे हैं। जब गेंद आती है तो लपक पड़ते हैं काफ़ी तेज़ी से, मौका नहीं देते बल्लेबाजों को 1 रन को 2 रनों में तब्दील करने का। इसी बीच 12वीं ओवर जो कि जारी है, दूर वाली छोर से कप्तान बड़ा शॉट लगाने की फिराक में पूरी तरह से चूंकि पॉल फर्नांडिस भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप पर नहीं थी। 12 ओवर की समाप्ति 59, 4 विकेट के नुकसान पर। सुदेश प्रभु देसाई फिर से एक बार गेंदबाजी के क्रम में जो कि दूर वाली शोर से शुरुआत करेंगे। 13वीं ओवर की हल्की सी फील्डिंग में बदलाव की कोशिश और तैयार अपनी गेंदबाजी लेकर गेंदबाजी करेंगे निहाल बोरकर को जो कि स्ट्राइक पर। स्कोर हुआ है 59, 4 विकेट के नुकसान पर। 13वीं ओवर की शुरुआत, पटकी हुई गेंद थोड़ी सी उछाल प्राप्त करते हुए, मगर इसी बीच संभल कर गेंद को दिशा दी कवर्स की ओर 1 रन के लिए। धीरे धीरे कदुकरण के साथ फिर से एक बार जमने का प्रयास यहाँ पर दिखाई देता है, जबकि 4 विकेटें अब तक हो चुकी है। टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए एमसीसी स्टैलियंस, उनका मुकाबला एमसीसी ड्रैगन्स के विरुद्ध में आज के दिन का ये पहला मैच। पॉल फर्नांडिस जाने जाते हैं बड़े शॉट लगाने की फिराक में, तो देखना होगा कि किस प्रकार का रवैया अपनाते हैं इस ओवर में। बैकफुट पर बिल्कुल ड्राइव, डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर, डिप लॉन्ग ऑफ की ओर, माफी चाहूँगा, खेल दिया है।
एक रन के लिए। अब बिल्कुल खुलकर कोई हिचकिचाहट के बगैर बल्लेबाजी होती हुई, हालांकि कुछ अच्छे शॉट लगाने भी काफ़ी ज़रूरी, क्योंकि इससे बिल्कुल बल्लेबाजों का मनोबल बड़ा रहता है, बना रहता है। कट करने की कोशिश फिर से एक बार, बिल्कुल सुंदरता से कट कर दिया, मगर सीधे फील्डर को पाया पॉइंट की दिशा में। जमीर करोल ड्राइव लगाकर बिल्कुल सुंदर ड्राइव, सुंदर फील्डिंग के साथ उस ड्राइव को रोकने में कामयाब हुई। गली में एक फील्डर और शॉट थर्ड मैन में भी एक फील्डर की तैनातगी, जो कि खास तौर पर जो बैकफुट पर स्लाइस कट किए जाते हैं उन गेंदों को रोकने का यह प्रयास कप्तान की ओर से। बैकफुट पर ये देखिए फिर से एक बार बढ़िया शॉट, इस बार निश्चित तौर पर चुनौती रहेगी फील्डर के लिए। तो देखना होगा कि गेंद को क्या रोक पाएंगे। बिल्कुल सुंदर फील्डिंग के साथ जब तक गेंद को लौटाया, 2 रन आसानी के साथ पूरे किए पॉल फर्नांडिस ने। बिल्कुल बढ़िया शॉट था और अच्छी दिशा की ओर खेला गया था, जो कि डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर, जहाँ पर फील्डर काफ़ी दूर तैनात है, बिल्कुल बाउंड्री एज पर। उस डिस्टेंस का, उस फासले का पूरा फ़ायदा उठाते हुए पॉल फर्नांडिस की एक बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी। कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार बड़ा शॉट, निश्चित तौर पर गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। बिल्कुल कदमों का खूबसूरत इस्तेमाल, ऑन द राइज खेल दिया था हाफ वॉली पर, और दिशा वही डीप एक्स्ट्रा कवर। और क्या ही शानदार शॉट। इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि कुछ अच्छे शॉट भी लगाने काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं बल्लेबाजों के लिए, और शायद मेरी ये बातचीत सुनी होगी पॉल फर्नांडिस ने, और जैसे ही सुना बिल्कुल ताबड़तोड़ रवैया उनका आक्रामक जो कि देखने को मिलता है। सुंदर टाइमिंग से भरपूर शॉट के साथ, जबकि गेंद निकली थी बल्ले के बीचों बीच से, उसे कहते हैं अच्छी टाइमिंग। उसी के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 68 रनों पर, जबकि ये हल्का सा महंगा ओवर साबित होता हुआ अब शायद गियर बदलकर बल्लेबाजी करने की कोशिश यहाँ पर दिखाई देगी बल्लेबाजों की ओर से। आखिरी गेंद संभवतः दूर वाली छोर से सुदेश प्रभु देसाई की बैकफुट पर कट कर दिया, फिर से एक बार सुंदर, मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात जमीर करोल 1 रन के साथ स्कोर 69 पर, जबकि 13 ओवरों की समाप्ति 4 विकेट के नुकसान पर। सुदेश राणे फिर से एक बार गेंदबाजी के क्रम में, जो कि दूर वाली छोर से, ओ बढ़िया शॉट, बिल्कुल जैसे गेंद आती है दिशा दे दी है डीप स्क्वायर लेग की ओर। 4 रन आते ही स्वागत किया स्वैग से पॉल फर्नांडिस। पॉली की अगर आप बल्लेबाजी की बात करते हैं, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है और उस स्तर पर, बिल्कुल एक सुंदर बल्लेबाजी उनकी ओर से। पहला बिल्कुल जैसे नए नए आए तो थोड़े से हिचकिचाहट बिल्कुल दिखाई दी उनकी बॉडी लैंग्वेज में, मगर अब बिल्कुल सेट होकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आते ही बिल्कुल कप्तान को चौका झड़ दिया डीप स्क्वायर लेग की दिशा की ओर। वहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस
जो कि साइड स्क्रीन के पास एक व्यक्ति शायद गार्डन में घूम रहे हैं, और एक आसान सा कैच कट करने की कोशिश, गेंद हवा में थी और लंगड़ाते हुए ये कैच फील्डर की ओर से। इस प्रकार से पॉल फर्नांडिस अपनी निजी स्कोर 21 पर आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं। तो अगले बल्लेबाज आए हैं अंकुश पाटिल, जो कि 7वें नंबर पर। अब तक कुल मिलाकर 5 विकेटें गिर चुकी हैं। विकेट इस बार मिलती हुई गेंदबाज सुदेश नुराने को, जो कि कप्तान है टीम एमसीसी ड्रैगन्स के। अंकुश पाटिल अपना गार्ड लेते हुए, अपनी मार्किंग करते हुए तैयार, मगर निहाल बोरकर बिल्कुल अभी भी जैसे के तैसे, यानी कि बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास से भरपूर नॉन स्ट्राइकर पर खड़े हैं, तैनात हैं। बैकफुट पर बढ़िया ड्राइव, पहले ही आते ही अपना खाता खोला है 1 रन के साथ। ही इज ऑफ द मार्क स्ट्रेट अवे। अंकुश पाटिल 14वीं ओवर ये प्रगति पर, और स्कोर इस 1 रन की मदद से जा पहुंचा है 74 रनों पर, 74, जबकि 5 विकेटें अब तक गिरी हैं। इस बार कलाई का उपयोग निहाल बोरकर के द्वारा 2 रन की कोशिश यहाँ पर रंग लाएगी। बिल्कुल अच्छी कोशिश करते हैं, और कहावत भी है हिंदी में, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो देखना होगा हार या जीत, कौन सी टीम जीतती है ये मैच और कौन सी टीम नहीं जीतती। मगर जैसे कि परंपरा रही है इस खूबसूरत एमसीसी मेंबर्स लीग की, हर मैच के बाद हमारे मुख्य अतिथि यानी कि जो गेस्ट होते हैं, उन्हें एक मोमेंटो और उनका स्वागत किया जाता है गुलाब के फूल से, और उसके बाद मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। तो देखना होगा इस मैच के मैन ऑफ द मैच कौन रहेंगे, कौन होंगे इस मैच के हीरो, और कौन होंगे आज के इस मैच के स्पेशल गेस्ट। गेंदबाजी बिल्कुल अब जानदार गेंदबाजी दिखाई देती हुई सुदेश राणे की ओर से दूर वाली छोर से। तो जब कभी विकेट गिरती है तो निश्चित तौर पर एक हौसला हिम्मत अफजाई होती है गेंदबाजों की, और वही दिखाई देता हुआ अब गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज में। बिल्कुल पटकी हुई गेंद गुड लेंथ पर कट कर दिया, इस बार पॉइंट की ओर। 1 रन के साथ 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए जमीर करोल थोड़ी से धीमी गति से गेंद के पीछे दौड़े, उसका पूरा फायदा उठाया निहाल बोरकर ने, और बिल्कुल मौके पर पूरा फायदा उठाते हैं निहाल बोरकर, और होना भी चाहिए क्योंकि मौके की तलाश में अक्सर दिखाई देते हैं। इसी के साथ 14 ओवरों की समाप्ति, 78 पर 5।
गेंदबाजी में संदीप दलाल दूर वाली छोर से, जो कि शुरुआत करेंगे 15वें ओवर की। थोड़े से वार्म अप के साथ तैयार हैं अपनी गेंदबाजी और अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं संदीप दलाल। अक्सर कहलाए जाते हैं जावेद मियांदाद। तो संतुष्ट है जिस प्रकार से फील्डिंग हुई है। थोड़ी सी साइड स्क्रीन को हरकत देते हुए वहां पर ग्राउंड्समैन थोड़ी सी मदद करते हुए बल्लेबाज की। स्ट्राइक पर मौजूद निहाल बोरकर कट करने की कोशिश, बिल्कुल सुंदरता से गेंद को दिशा दी है। 2 रन की यहाँ पर कोशिश रहेगी। बिल्कुल देखते ही देखते 2 रन क्या उन्हें मिल सकते हैं 4 रन, और ये 4 रन मिलते हुए बिल्कुल कलाइयों को खूबसूरत इस्तेमाल किया था। गेंद को बिल्कुल ग्लांस कर दिया था डीप फाइन लेग की ओर, और गेंद वहां पर फील्डर को चकमा देकर सीमा रेखा पार जा चुकी है। इस 4 रन के साथ स्कोर 82 पर पहुंचता हुआ। अंकुश पाटिल माफ़ी चाहूँगा थे बल्लेबाज, जिन्होंने कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल किया और वहां पर अब फाइनल की दिशा की ओर फील्डर को थोड़ी सी हरकत देते हुए संदीप दलाल फिर से तैयार दूर वाली छोर से गेंदबाजी के क्रम में। बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, गेंद को रोका जाएगा 1 रन पर। बिल्कुल आते ही अपना जौहर दिखाने की कोशिश यहाँ पर अंकुश पाटिल की ओर से। जब गेंदबाजी करते हैं तो रनों पर अंकुश लगाते हैं अंकुश पाटिल, और जब बल्लेबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पर जमकर हाथ खोलकर बल्लेबाजी होती है उनकी ओर से। पटकी हुई गेंद इस बार फिर से एक बार कलाई का उपयोग निहाल बोरकर के साथ। पहला रन काफी तेज और दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े, कोई हिचकिचाहट नहीं। बिल्कुल इसे कहते हैं गुड रनिंग बिटवीन द विकेट का एक बेहतरीन मुजाहिरा यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। अब बिल्कुल जिस प्रकार से जिस गति से रन पर निश्चित तौर पर दिखाई देते हुए अंकुश पाटिल उनके साथ निहाल बोरकर अपने 23 पर बल्लेबाजी करते हुए। इस बार फिर से एक बार कलावी के साथ मोड़ दिया है गेंद को 1 रन के लिए, जबकि आते ही डॉक्टर आदित्य ने रन पर अब बल्लेबाजी कर रहे हैं। वीकेंड्स की शुरुआत में घमासान इस मैदान पर होती हुई, जो कि एमसीसी का एक खूबसूरत मैदान। आप सुन रहे हैं नदीम अहमद को। जैसे ही मॉनसून खत्म हुए, बारिश चली गई, क्रिकेट की बौछार आती हुई, हर एक मैदान जो कि क्रिकेट टूर्नामेंट से सजा हुआ गोवा के सरजमीन पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि गोवा का जिक्र पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे जगत में होता है जब आता है क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। काफ़ी सारे टूरिस्ट नेशनल इंटरनेशनल हमारे इस खूबसूरत राज्य की ओर आते हुए। बिल्कुल गेंद हवा में और सुरक्षित रहेंगे वहां पर। बढ़िया फील्डिंग सुदेश प्रभु देसाई की ओर से। जब तक गेंद वापस आती थी, नवासी पर 5।
सुधीर सेठ की गेंदबाजी की शुरुआत 16वें ओवर की स्कोर हुआ है अब 90 इस 1 रन के साथ। काफी तेज 91 पर पहुंचता हुआ बिल्कुल पहले गेंद पर 2 रन आसानी के साथ। सुंदर रनिंग का मुजाहिरा सुधीर सेठ को लाया गया है गेंदबाजी में, जो कि 16वें ओवर की शुरुआत कर चुके हैं। स्कोर 91 पर पहुंचता हुआ 91 केवल 9 रन दूर 100 रनों से। डॉक्टर आदित्य बढ़िया ड्राइव कलाइयों के साथ इस बार खेल दिया है, 2 रन आसानी के साथ मिल सकते हैं, जबकि हम जानते हैं कि अच्छी रनिंग का मुजाहिरा इन दोनों के बीच देखा जा सकता है। फिर से एक बार सुंदर रनिंग के साथ 2 रन, यानी कि हर एक गेंद में अब 2-2 रन बटोरते स्कोर को पहुंचाते हुए 93 रनों पर। बिल्कुल एक अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर, जिस प्रकार से बल्लेबाजी की उम्मीद की गई थी डॉक्टर अंकुश पाटिल की ओर से, निश्चित तौर पर वो दिखाई देते हुए। निहाल बोरकर अपनी निजी 26 पर पहुंच चुके हैं। फिर से एक बार शानदार पारी खेलते हुए निहाल बोरकर, कंसिस्टेंट परफॉर्मर जिसे कहते हैं, को दिखाई देता है। इसी बीच बिल्कुल गेंद हल्की सी डिफ्लेक्ट होकर चली गई है गली की ओर 1 रन के लिए। फ्रॉम बैट कैच का मौका था, एक मौका जाता रहा साइश मामरे की ओर से। ओहो, कोई इशारा नहीं, यानी कि बल्ले का मिलाव बिल्कुल था। और बिल्कुल जिस प्रकार से प्रतिक्रिया थी विकेट कीपर की, निश्चित तौर पर लगा था कि कैच के लिए गए हैं, मगर कैच छूटी, मौका गंवाया साइश मामरे ने। स्कोर 94 पर पहुंचता हुआ मेरे कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है मेरे दोस्त अब्दुल भाई का, जो कि नूरानी क्लब के साथ जुड़े हैं। तो स्वागत है अब्दुल भाई का, जो हमारे साथ जुड़े हैं कमेंट्री बॉक्स में, जो नूरानी स्पोर्ट्स क्लब के साथ बिल्कुल एक बेहतरीन शख्सियत, एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हमेशा अक्सर इस मैचों में देखे जा सकते हैं, और जिसे के साथ भी काफ़ी गहरा संबंध उनका, एक क्रिकेट प्रेमी जिसे कह सकते हैं मेरे अच्छे दोस्त अब्दुल। इसी बीच बिल्कुल एक बढ़िया शॉट के साथ 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए स्कोर को पहुंचाते हुए 98 रनों पर। ओहो, अब दिल्ली दूर नहीं, यानी कि 100 रन के लिए अब केवल 2 रन दूर हैं एमसीसी स्टैलियन की टीम। इसे कहते हैं अच्छी बल्लेबाजी। डॉक्टर अंकुश अपनी निजी 12 पर, जबकि निहाल ने कर दिया है गेंदबाजों का बेहाल। कर रहे हैं बल्लेबाजी 30 रन पर। सुधीर सेठ की गेंदबाजी राजेश गौड़ के एंड की ओर से ड्राइव करने की कोशिश, हल्की सी बाहर को जाती हुई गेंद, अच्छी ये विकेट कीपिंग, इस बार कोई चूक नहीं। ओवर की समाप्ति 16, 98 पर 5। तो कैच का मौका एक आसान सा, फिर से एक बार जाता रहा साइश मामरे के हाथों से। 2 कैच लगभग अब छूटे हैं, हालांकि एक अच्छी स्टंपिंग का श्रेय उन्हें जाता है। शैलेश वेनेकर काफ़ी उम्मीद में थे कि कैच ली जाएगी। फिलहाल स्कोर पहुंचता हुआ 99 रनों पर 100 रन पूरे होते हुए यहाँ पर एमसीसी स्टैलियंस के, और 101 पर पहुंचता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ।
बिल्कुल अब गियर बदल कर बल्लेबाजी होती हुई ये देखिए, बिल्कुल दमखम लगाकर शॉट खेल रहे हैं निहाल बोरकर अपनी निजी 32 पर बल्लेबाजी करते हुए। जाने दिया गेंद को, टाटा बाय बाय, वाइड का इशारा। बिल्कुल एक नपी तुली बल्लेबाजी के लिए अक्सर जाने जाते हैं और हर दफ़ा जब कभी बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं तो अपनी मुकम्मल बल्लेबाजी करते हैं और पूरे 35 रन बनाकर ही लौटते हैं। इसे कहते हैं आत्मविश्वास से भरपूर ये बल्लेबाज। बिल्कुल एक चैंपियन खिलाड़ी है निहाल बोरकर। निहाल कर दे स्कोर 34 पर पहुंचते हुए। तो 34 पर पहुंच चुके हैं निहाल बोरकर। अब लगा सकते हैं एक बड़ा शॉट या फिर एक रन ले रिटायर्ड हो सकते हैं। तो देखना होगा, ये है एक योद्धा खिलाड़ी। 4 रन बटोरे हैं आखिरी रन पर। बिल्कुल 38 रनों का योगदान दिया है निहाल बोरकर ने। वाह क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। फिर से एक बार वही रंग रूप और वही नजाकत उनकी। 34 रन बनाए हैं, बिल्कुल नाबाद। बट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन बल्लेबाज को आना होगा वापस पवेलियन। तो बिल्कुल तालियों के साथ उनका स्वागत होता हुआ जिन्होंने 34 रन, माफी चाहूंगा 38 रन बनाए हैं 37 गेंदों में। बिल्कुल रन बॉल की यहाँ पर रही थी उनकी बल्लेबाजी। और नए बल्लेबाज सुदीप फल देसाई जो कि अपने साथी अंकुश पाटिल के साथ क्रीज पर दिखाई देंगे थोड़ी सी वार्म अप करते हुए। मगर अब बिल्कुल जिम्मेदारी ओढ़ लेनी है अंकुश पाटिल को। मगर फिलहाल स्ट्राइक पर हैं सुदीप फल देसाई। रहेगी ये संभवतः आखिरी गेंद 17वें ओवर की। सुधीर शैलेश वेलेकर की गेंदबाजी। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 17 ओवर समाप्त 108, 6 विकेट के नुकसान पर। तो स्वागत आप सभी का फिर से एक बार। आप देख सकते हैं अब बिल्कुल धूप पसेरी हुई मैदान पर, जबकि सुबह के वक्त काफ़ी देर तक सूरज के दर्शन नहीं हुए थे। मगर अब बिल्कुल सूरज पूरी मुस्कुराहट के साथ आसमान पर अब चमकता हुआ। और मेरे बगल में स्कोरिंग की डिपार्टमेंट में बैठे हैं सूरज, जो कि भाई हैं सीता के। सीता के तो आप सभी जानते हैं कि एक बेहतरीन स्कोरर उनके भाई सूरज। और मैं नदीम अहमद और मेरे बगल में बिल्कुल निखिल टांगी, जो कि प्रोप्राइटर गोवा लाइव कास्ट के इसी बीच बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग वहां पर एमलॉन डिसोजा की। फील्डिंग में माहिर एमलॉन डिसोजा। एमलॉन चलता जाए चलता जाए।
काफ़ी मजबूत फील्डर हैं एमलॉन, अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, एक अच्छे खिलाड़ी हैं। थोड़ा सा उन्हें अब हरकत देते हुए गेंदबाज कप्तान सुदेश राणे गेंदबाजी में, जो कि 18वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। सभी दर्शकों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत। लोअर फुल टॉस, बिल्कुल बढ़िया ड्राइव यहाँ पर सुदीप फलदेसाई की ओर से, मगर अब बिल्कुल जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं डॉक्टर अंकुश पाटिल, जो अपनी निजी 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि सुदीप फलदेसाई ने अभी अभी अपना खाता खोला है 1 रन बनाकर। अक्रॉस द बैट खेल दिया इस बार, हल्की सी अपील वहां पर, मगर गेंद बीट कर निकल चुकी है। देखना होगा जब तक गेंद लौटती है कितने सारे रन बना लेंगे। कम से कम 3 रन बनाते हुए अगर कोशिश करती है तो निश्चित तौर पर 4 रन भी बन सकते थे। तो फिलहाल लालच बुरी बला ये सोचकर बल्लेबाज रुक गए हैं। 3 रन बनाकर स्कोर को पहुंचाया 113 रनों पर। 18वीं ओवर जो कि जारी, अभी भी 3 गेंदों का आना शेष। राउंड विकेट गेंदबाजी होती हुई कप्तान की ओर से, जबकि स्ट्राइक पर अब आप पहुंचे फिर से एक बार नए बल्लेबाज सुदीप फलदेसाई। बढ़िया शॉट ऑन द राइज खेल दिया है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा। 1 रन के साथ स्कोर 114 पर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, सब कुछ बढ़िया दिखाई देता हुआ अब मैदान पर। येलो आर्मी बनाम ऑरेंज आर्मी के बीच ये मुकाबला, यानी कि MCC स्टैलियन जो कि बल्लेबाजी करें, जबकि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए MCC ड्रैगन्स की टीम। बढ़िया शॉट इस बार फिर से एक बार लॉन्ग मिड विकेट की ओर खेल दिया इस बार। एमलॉन डिसोजा वहां पर तैनात, सुंदर फील्डिंग, बढ़िया थ्रो। जिस प्रकार से अब बिल्कुल जमकर अब गति दिखाई देती है, उसी प्रकार से फील्डिंग में भी गति। 18 ओवरों की समाप्ति, 116 पर 6। ओ बढ़िया शॉट था, उतनी सुंदर फील्डिंग। संदीप दलाल गेंदबाजी में जो कि शुरुआत कर चुके हैं 19वीं ओवर की। आखिरी अब बचे 2 ओवर। काफ़ी सारे दर्शक का जमावड़ा यहाँ पर देखा जा सकता है। इसी बीच संदीप दलाल की गेंदबाजी, मीडियम पेसर, कट करने की कोशिश, हल्की से बाहर को जाती हुई गेंद, मगर पूरी तरह से चूके डॉक्टर अंकुश पाटिल, जो अपनी निजी 18 रनों पर अब बल्लेबाजी कर रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल, इस बार बल्ले तक पहुंची थी गेंद, मगर सुंदर फील्डिंग नहीं गेंदबाजी पर, अच्छा फॉलो थ्रू वहां पर संदीप दलाल का। एक बेहतरीन खिलाड़ी, ऑलराउंडर परफॉर्मर संदीप दलाल की गेंदबाजी। 19वीं ओवर में स्कोर 115, माफ़ी चाहूँगा 116 नहीं, बल्कि यहाँ पर करेक्शन हुआ है हमारे डिजिटल स्कोरर की ओर से।
कट कर दिया। इस बार रन कुछ मिलेंगे, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3, और उससे भी ज्यादा अगर दौड़ते हैं तो फिर मिल सकते हैं 4, मगर फिलहाल 2 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 117 रनों पर 117। अब बच्ची हैं कुल मिलाकर 8 गेंदें, तो देखना होगा बच्ची भी इन 8 गेंदों में कितने रन बनाने में सक्षम रहेंगे बल्लेबाज। जबकि अब बिल्कुल तेज तर्रार बल्लेबाजी होती हुई बिल्कुल हर एक अंकुश पाटिल के साथ सुदीप फलदेसाई 20 पर अब डॉक्टर अंकुश। ओ इस बार कैच का मौका, फिर से एक बार काफी तेज रफ्तार से गेंद जाती है, फिर से एक बार डिफ्लेक्शन होता हुआ विकेट कीपर के ग्लव्स से ये तीसरा कैच छूटता हुआ। तीसरा कैच छूटता हुआ साइश मामले की ओर से, अपने आप से थोड़े से नाराज चल रहे हैं। वहां पर हेलमेट रखा है, अगर गेंद हेलमेट को रखती है तो कुल मिलाकर 5 रन मिल सकते हैं, उसका भी उन्हें ध्यान देना होगा। मगर फिलहाल गेंदबाजी में संदीप दलाल थोड़ी सी हरकत देते हुए फील्डरों को, खासतौर पर गली के फील्डर को, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद। और बढ़िया शॉट, मगर टाइमिंग उतनी खास नहीं। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचेगा 120 पर। अगर T20 की बात करें तो 120 गेंद मिलती हैं, जबकि 19 ओवरों में 120 रन बनाए हैं टीम MCC स्टैलियंस। एमलॉन को लगा है आखिरी ओवर में, जबकि स्कोर 119 ओवरों की समाप्ति के बाद। तो देखना होगा कि किस प्रकार से बल्लेबाजी होती है आखिरी ओवर में, क्या तोड़ फोड़ की बल्लेबाजी होती है, हर एक गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की फिराक में दिखेंगे बल्लेबाज, या फिर अपनी अच्छी गेंदबाजी के दम पर एक अच्छा ओवर घटाकर पहले इनिंग का समापन करेंगे एमलॉन डिसूजा, जो गेंदबाज चलता जाए चलता जाए। तो फिलहाल राउंड विकेट, बल्लेबाज भी तैयार। पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर टाटा बाय बाय गुड बाय गया बल्लेबाज, यानी कि ये 7वां विकेट गिरता हुआ टीम MCC स्टैलियंस का। तो पहली गेंद पर बिल्कुल एक विकेट लेकर अच्छी ओवर की शुरुआत यहां पर करते हुए एमलॉन डिसोजा।
तो डॉक्टर अखिल लवंडे जो कि अगले बल्लेबाज, बढ़िया शॉट, गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात सुदेश की बिल्कुल सुंदर फील्डिंग, देखना होगा कभी भी मामला हो सकता है, मगर पहुंच चुके हैं। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ अब 121 पर। बिल्कुल ये बढ़िया रनिंग यहाँ पर जो कि डॉक्टर अंकुश के, दोनों ही मेडिकल डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अंकुश पाटिल और डॉक्टर अखिल लवंडे। और इनसाइड आउट का ये प्रयोग, फिर से एक बार गेंद, इस बार संदीप दलाल की वजह के लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 1 रन के लिए। हालांकि सुंदर गेंदबाजी बिल्कुल कर रहे हैं, मगर बल्लेबाज भी कुछ कम नहीं, मौका तलाशते हुए उस गेंद का कि जिस गेंद पर मारा जाएगा सबसे बड़ा शॉट। गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, यहां मिल सकते हैं 2 रन। जी बॉल की स्थिति रहेगी अब। आखिरी 2 गेंदें आनी अभी भी शेष। ओ ये खराब गेंद, एक खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया और शायद दौड़कर 4 रन पूरा कर लेंगे। लेग बाय का इशारा और 3 रन दौड़कर पूरे किए तो स्कोर पहुंचता हुआ 127 पर। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल, पहले इनिंग की आखिरी गेंद, स्कोर हुआ है 127 रन, 127 फॉर 7। और रिवर्स का प्रयोग, काफी खराब आइडिया था ये। और पहली गेंद पर 1 विकेट और आखिरी गेंद पर भी 1 विकेट की सफलता एमलॉन को। तो 128 का रहेगा लक्ष्य।
So welcome back. The target is 128 of 120 balls. Almost run a ball situation here for them. So on strike is Saish Mambre. On strike is Aditya Prabhugaonkar, and on the bowling mark is Nehal Borkar. He is charging in. The very first delivery of the second inning. Watchfully played with the full face of the bat. A very good morning to everyone who has just joined us to watch this wonderful, lovely match of Margaon Cricket Club Members Cricket League Season 9 2023. And you're listening to Nadeem Ahmed. So Nehal Borkar once again on the bowling mark on his second delivery. Just outside the off stump, beautifully put away. Oh, slight bit of a fumble will allow a single here to get off the mark for Mahambre. Saish Mahambre is off the mark with a single with a slight bit of a fumble there from Naval Naik, who has been deployed in the mid-off region. So let me brief you about the fielding in the offside. There is a fielder now. Murmai Das is walking towards the mid-off. Which position that he is taking? Oh, maybe he is coming in the short extra cover. There is a fielder in the covers, that is Kapil Angle. Deep point. There is a fielder in the gully. Oh, beautifully put away. It's a bad delivery and paid the prize. Nehal Borkar. And look at the beauty of Aditya Prabhugaonkar. He is off the mark with a beautiful boundary in the deep square leg region. That was a bad delivery and paid the prize for that, Nehal Borkar. The target is not much at all, just 128, and they should stop giving this kind of a loose deliveries or make mistake in allowing the batters to open and play freely. Lovely drive straight back to the ball, and the ball has just gone past the umpire for another single. He's been definitely timing it quite sweetly, Aditya Prabhugaonkar. And the score slowly moving up to 6 runs. And the headings of the sporting activities of Herald, Voice of Sports. Dipti stars with all-rounder show as India Women I maiden test win at home. Lovely shot straight down the ground, and that will race away to the fence. Absolutely no chance, no problems. The ball has gone in between mid-off and mid-on for a boundary. That boundary will take the score to 10. Absolutely wonderful strike that was on the rise from the straight bat of Saish Mahamre. And after a patient 113 ball, 67 runs in India's first inning total of 428, Sharma destroyed England lineup with a sensational 5 overs. Five 3-4-7-5 spell, helping the host take a massive 292 runs lead, and the visitors were bundled out for 136 in the very first essay, despite Nat Sivabrunt composed 59 runs. But in the meantime, and that has come to an end. The very first over, which has come to an end on a total of 10 without a loss, chasing 128 win. MCC Dragons. So it's Dr. Ankush Padil on the bowling mark from the far end, and very happy to have Amlon D'Souza in the commentary box. Flamboyant of Dragons, a complete all-rounder performance. In the meantime, beautiful work of the wrist from none other than Aditya Prabhugaonkar. He's using his wrist work so well. No chance, the ball raced away. The very first delivery of Dr. Ankush Patil has been shown to the fence in the deep long leg region. Oh, what a way to start the second over. Absolutely bang on target.
So, what a good news! The BCCI has decided to retire World Cup winning captain MS Dhoni's number 7 jersey to honor his rich contribution to Indian cricket. Absolutely very deserving MS Dhoni, the finest captain that Indian team had. Under his captainship, India could bring all the World Cups, T20, ODI, and the Test. In the meantime, is Aditya Prabhu Gaungara. One of the ball is up in the air, nicely taken, straight to the field in the covers. And what a take from Kapil Angle. Absolutely wonderful catch. That is only Kapil Angle can take such a quality catch in the covers. So the dismissal of the very first wicket, and Saish Mamre wanted to play, but he played straight to the fielder, and the fielder, making no mistake in grabbing that opportunity, Kapil Angle grabs the opportunity. Saish is out on a total of just 5 runs. So the new batter is Amlon D'Souza joining in at number 3. That is one down batter. And Aditya, Dr. Ankush Patil picking up a wicket of Saish Mamre, I beg your pardon. And Aditya Prabhu is on the non-strikers end, wanting a single but waiting is the call coming from Amlon D'Souza, taking his time, and rightfully so. The batter has to come to a comfortable position, and Amlon is taking his time, which is good sign of a batting. Oh, just allowing the ball to go past. Quick delivery that was from Dr. Ankush Patil. Line is perfect, just slightly outside the off stump. And the speed outstanding, very quick delivery that was. Look at on the speedometer is showing 135 kilometers. Oh, the ball is up in there and played straight to the fielder. That is another wicket here. Oh dear, the wickets are falling like a house of cards, one after another. And Amlan played straight to Manu. Murmai Das picked up a catch. Wonderful, and that's a dismissal on just a duck. Very unfortunate dismissal. This is after that quick delivery. The second wicket fall of MCC Dragons. As the captain steps in, Sudesh Rane at number 4. That is 2 down batter. Amlon is the out on a golden duck without scoring on just facing just 2 deliveries. And Saish Mamre, after facing 5, he scored 5 runs. So 2 wicket down on a total of 15 on the board.
So Sudesh Rane, the captain, joins in at number 4. The captain's inclusion in the batting order will definitely make some difference, and definitely the captain has to play and captain's inning, which is a need of an hour. In what a way that Dipti Sharma bowled celebrates her 5 wickets all with teammates during the second day of the one-off cricket women test match between India and England at D.Y. Patil Stadium in Navi Mumbai on Friday. What an outstanding performance that was from her. In the meantime, just trying to work it out in the covers, but very quick Kapil in action. Absolutely wonderful field that is to watch. Very quick, very agile. Took a brilliant catch, and what a way to field. Absolutely not giving any chance to the batters to go for that single. Nihal Borkar sliced away beautifully, but straight to the fielder. One of the best in the business. Kapil in the covers. Look at the wall of the fielders. Gully, point, cover. Deep point, cover, and long off. This is a fielder in the forward extra cover. That is Murmai Das. Manu. Oh, watchfully played, but played straight to the field. Absolutely in a wrong direction. That he's slightly unhappy on his own batting. Definitely Aditya Prabhu Gaonkar needed to put it in the gap. That could have fetched him a couple of runs minimum, because there's no fielder in the for that particular position in the deep mid wicket region. Oh, nicely done. Absolutely wonderful. Definitely he'll get a boundary. Look at how easy he could get the boundary, because there are only 2 fielders to stop the ball in that huge area covering from mid on to fine leg region. Almost half the ground is open, and that's the reason why a lot of fielders been deployed in the covers, and he's maintaining that perfect line, Nihal Borkar. But the batter has to do something, slightly shuffle across and then try to put the ball in the onside. But that was beautifully picked up with a good timing, and no need to run for that, as the ball has done all the running. Score reaching 19 in the third over. That is the last delivery. This would be probably good looking shot straight back to. Oh, absolutely wonderful commitment there from Nihal Borkar. A good fielding on his own ball, and that will bring an end to the third over. Score is 19 for the loss of 2 after 3 overs. Ankush Patil once again on the bowling mark from the far end. Fair delivery to start with the 4th over. The score remains unshaken on 19. Lovely shot, beautifully picked up. Once again the ball will beat the fielder. He's in pursuit of the ball. The ball will reach the fence. That is wonderful shot from the captain Sudesh Rane, and he's showing the way how to bat in this crunch situation when the wickets are falling and the bowlers are trying to dominate the batting lineup. This is how you get to just ease a bit of pressure from the shoulders, and Sudesh Rane shows it how
you need to do in this tense pressure situation. Wonderful shot that will definitely boost his confidence sky high. And Dr. Ankush Patil once again on the bowling mark from the far end, right in the block. Beautifully done. Wristy work from Sudesh. Will put another boundary in place. Lovely. This is absolutely wonderful batting from the captain, and he's definitely batting the captain's knock. Back to back boundaries from Sudesh Rane. The score has gone up to 27 quickly. What it was 19 with the help of these two boundaries back to back from the captain. Awful toss. Dr. Ankush need to really assess his line in length. This is not the kind of bowling that you have to bowl to a new batter to get that confidence. You have to be absolutely spot on. Bowl at good areas where it's a bit difficult for the batter to negotiate. Those line in those areas has to be maintained by the bowler to keep the pressure going after the fall of 2 wickets. Oh, beautifully done, nicely bowled right in the block hole. Oh, it's a good not. It is not a good news here for the batter. Aditya Prabhugaonkar is limping, maybe a muscle pull. When the things are slightly getting better, and Aditya Prabhugaonkar is limping. He needs some time to just get himself back on track after that muscle pull. Oh, the ball is up and could be out. Kapil never drops many. He's one of the finest catches. This is the second catch for Kapil Angle, and that will dismiss Aditya Prabhugaonkar. He was not looking good with that limping leg. He was not at all confident with the pain, definitely, which was playing in his mind. And absolutely, what a disastrous shot to play from Aditya Prabhugaonkar. Third wicket goes down on a total of 28. A change in the bowling from the far end. This is Kapil Angle on the bowling mark. So new batter is Pritesh Prabhu, who joins in at number 5 after the fall of the wicket of Aditya Prabhugaonkar. Oh, definitely, this is absolutely wonderful bowling performance from Kapil.
So this is the fifth which is in progress, and wonderful bowling from the far end. Kapil in the bowling mark from the far end to Pritesh Prabhu alongside the captain. Watchfully played, and someone is required there to give the kind of support which is needed now to form a partnership at this point of time after losing 3 wickets. First to dismiss was Saish Mambre, followed by Amlon and Aditya Prabhu Gaonkar as the last wicket till now. So wonderful over to mark an end to the fifth 5 over completed. It's 30 for 3. Paul Fernandes on the bowling mark to begin the sixth over. It's Paulie from the pavilion end. Lovely drive on the front, straight down the ground to long offer. There is a challenge. Oh, absolutely well done. Nicely done. Only Kapil can stop that. Speeding delivery. But by the time he picks up and throws 2 runs, easy picking up here for Pritesh Prabhu alongside the captain. This is turning out to be a good partnership, which should go a long way, which will be better for the Dragons to chase the target of 128 to win. Flatted delivery from Paulie. A single hand here for Pritesh Prabhu after the fall of 3 wickets. So in this inning also what we can see is it is a regular fall of the wickets in regular intervals, not allowing a partnership to form. What we saw was a very good start from Saish Mambre and Aditya Prabhu Gaonkar, but they could not last there for a long time as Saish Mambre was out for just 5 runs after facing 5 deliveries. Though Aditya Prabhu Gaonkar played for some time, contributed 14 runs of 11. But Amlon D'Souza was a very unfortunate dismissal for him. He played straight to the field in the covers, and after 2 deliveries, he got back to the pavilion. Oh, sliced away, a little bit of bat on that. The ball could race away in the deep third man region. Should be a couple of runs or maybe 3. You never know. Just 2. And after Amlon was Sudesh Rane and Aditya Prabhu Gaonkar. We saw a good partnership. Later, it was a dismissal of Aditya Prabhu Gaonkar. What a 2 fantastic catch taken by Kapil Angle to dismiss 2 batters. And now it is Pritesh Prabhu who's giving a kind of support which is needed now. It's looking good. Now things are getting slightly better for the batters coming down the track. This time captain drives it towards the long on where Ankush Patil is deployed. Should be just 1 to take the score to 36.
6 overs gone by, going at the rate of 6, 36 for 3. Caps once again on the bowling mark from Rajesh Godge Pavilion and into the 7th over. 36 for 3 as Sudesh Rane, the captain, is batting on 13, his individual score, and Brijesh Prabhu is batting on 4. Oh, coming down the track and good stumping that is, but denied by the square leg umpire. Not good enough to convince him. Prashant Patil says not out straight away. Good work there from the wicket keeper. Akhil Lavande behind the stumps, but not as quick as Saish Mahamre. He almost had broken the record of MS Dhoni, the fastest stumping of all time. 0.5 seconds way outside the off stump and is wide, signaled by Sandesh Gaonkar. Oh, lovely shot straight down the track and deflection there from the bowler. I hope he's fine. Oh, he's in pain. Definitely look at that. His limping ankle is the area where the ball hit him right out from the bat. Yes, he's in pain. He is in excruciating pain as he's down on the ground. Needs some ice or maybe some pain relief spray. So Kapil is up and fine after that treatment from our physiotherapist.
So quick good work from Dr. Reinald Rodriguez. Done his masters from Manchester, United Kingdom. Our physiotherapist who's working for Chocolate College. In the meantime, could be a couple of runs here, and yes, they will be going for it. This is exactly how they need to run. They have to put pressure and getting those 2 runs comfortable. They have to keep pushing, and that is exactly what the batters of MCC Stallions is to do, especially Nihal Borkar. So push for 2 when it is 1. That's exactly how you're trying to put pressure on the fielders. And when the fielder knows this fact, then they tend to fumble because they have to return the ball quickly. They want to stop the batters on 1. In the bargain, a slight mistake can definitely give comfortable 2 runs to the batters. Oh, the fitness freak Shivam Mishra is definitely bowling a few deliveries to Sudhir. And of 7 overs, 44 for 3. Still, we can see a bit of a limp there. Limping walk of Caps Kapil, only because of the pain. Right on his ankle, the ball hit him right out from the bat. In spite of the fact that he's a quality player, ex-Ranji, but see the kind of injury they have. So a non-professional player has to be very careful on the ground. When the professional player can get injury, definitely the non-professional players are quite vulnerable. In the meantime, nicely done. Just a scoop. Reminded me of Dil Scoop. In the meantime, absolutely wonderful running between the wickets. 3 runs after that scoop coming from Sudesh Rane, the captain. Definitely taking the challenge against team MCC Stallions in a mission to reach to the target of 128 to win against Stallions. Sudesh Rane, and good support has been provided now from Brijesh Prabhu, who's playing on now 10 runs his individual score. Oh, good line, slight a bit of a fumble there from Akil Lavan. The ball is heading straight to the deep third man region. Should be a couple of runs or maybe a boundary. As umpire is having a good look at that, what it is, just 2 runs. He is now satisfied and getting back to his position. Prashant Patil, the official umpire, bowler's end. That was definitely a bad miss there from the wicket keeper Akil Lavande. He should have stopped that. Oh, slight bit of outside edge, but no run because there's a field in the short field man region. Taken no chances. This was a good call from the captain, quickly sending Brijesh Prabhu back to his crease. Score 49, just a run away from what could be 54 Dragons. On the back foot, beautiful shot, and that will definitely race away. It's a boundary, and what a way to bring in a boundary with the 4 runs for 50 runs. A slight bit of a shuffle and beautifully put away right out from the middle and in the deep square leg region, as Nihal Borkar, one of the finest fielders, has given up that chase. That only shows the quality of the placement from Brijesh Prabhu. On the back foot once again, sliced it beautifully but straight to the covers fielder. No chance of a run as the ball is heading straight to
Murmai Das for no run. End of 8 overs, 53 for 3. In the meantime, once again, Kapil has been brought back into the bowling proceedings from the pavilion end, and the groundsman is walking. Got hold of a cat. Some funny moments. On the back foot, beautifully played, but straight back to the ball. Good backup fielding there from Manu Murmai Das. Today he could not score, but we'll have to wait and watch his bowling. He will definitely give his best when it comes to the bowling of Murmai Das. Oh, once again, this is absolutely wonderful bowling from Kapil. What a tight line over that he's bowling, and not allowing a single even to the batter like Brijesh Prabhu, who's capable of scoring easy boundaries. On the back foot, once again, a slight bit of a shuffle to play across in the deep square leg region, as exactly in this manner he hit a boundary in the deep square leg region, where when Nihal had given up the chase, straight down the ground, straight to Polly. Polly very quick, just a single. This is a good control from Kapilangre. He seems to be back on his feet and looking quite good now. No limping around. He has overcome the pain. 9 has gone by. It's 55 for 3. Pauly's been deployed in the long on region, and with his wonderful bowling, of course, he could not score much today. With the bat, he just contributed around 21, which was still a good score as compared to the others after Nihal Burkar. Going Gaonkar on the bowling mark from the pavilion end to begin the last over before the drinks. A tall bowler to a tall batter, that is Brijesh Prabhu. Well, this is going to be fun before the drinks break. 55 for 3 on the board. Flighted delivery, beautifully played away. A gentle drive in the covers, as and no. Quickly setting him back. Sudesh Rane taking full control of the batting order
as he is instructing and directing the batter Brijesh Prabhu how to just get going. So someone need to take the responsibility of batting, and that is the captain who has taken the responsibility of the batting. In the meantime, lofted shot, the ball is up in the air, and there is a fielder getting underneath it. Polly has taken a wonderful catch. Absolutely brilliant, right in front of the commentary box in the long on region. It drinks big. So the next batter is Sandeep Dalal, the flamboyant, the best middle order batter, and the Javed Miandad of team. Sandeep Dalal, lot depends on him as well, alongside the captain Sudesh Rane, as Brijesh Prabhu was out on 17 in 19 deliveries. What a wonderful catch taken on the long on region by Paul Fernandes, diving on front and grabbing the opportunity inches from the ground, and left the audience clapping in surprise. What a fantastic catch that was. Welcome back. Govind Gaonkar picks up the wicket. A lovely drive from Sandeep Dalal to get off the mark with a single. Sandeep Dalal knows that he has to play an important role in this run chase. His contribution will be absolutely very crucial. And someone like Sandeep Dalal, if can contribute, definitely it will be a easy win for the Dragons. And if it doesn't, things will be definitely difficult for the team to chase 128. But in the meantime, both the batters are putting up a good show here. Singles each in the 10th over. Govind Gaonkar bringing those changes in the field. Kapil Angle in the long on. This is turning out to be what a good over from Govind Gaonkar. Absolutely spot on ball. He picked up a wicket off
Brijesh Prabhu in pulling the right areas, continues to put pressure. Outside edge will be a no run. End of 10 overs, 57 for 4. तो दर्शकों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत। अब बची हुई 10 ओवर में यानी कि 60 गेंदों में 71 रनों की आवश्यकता। तो 7 रनों के रन रेट से रन बनाने होंगे प्रत्येक ओवर में अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो। जबकि अब तक कुल मिलाकर 4 विकेटें खो चुकी है टीम एमसीसी ड्रैगन्स 128 रनों का पीछा करते हुए। फिलहाल गेंदबाजी में मुरमाई दास दूर वाली छोर से गेंदबाजी के क्रम में। बैकफुट पर खेलने की कोशिश, बार हल्की सी फंबल, वहां पर विकेट कीपर अखिल लवंडे द्वारा इसी बीच पूरा फायदा उठाया। हालांकि बाय का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। काफी सारे रन रोके जा सकते हैं विकेट कीपर के रूप में। तो अब तक कुल मिलाकर 2-3 गलतियां निश्चित तौर पर कर बैठे हैं विकेट कीपर अखिल लवंडे। तो फिलहाल मनु फिर से एक बार तैयार दूर वाली छोर से गेंदबाजी में कदमों का इस्तेमाल किया। इस बार गेंद हवा में कैच का मौका हो सकता है। आसान सा संदीप दलाल खेलना चाह रहे थे कवच की दिशा की ऊपर से, मगर फिर से एक बार एक आसान सा कैच दे बैठे। ये तीसरा कैच कपिल आंगले के हाथों से लिया गया है, बिल्कुल तीसरा कैच। और संदीप दलाल जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब होगा बिल्कुल मामला थोड़ा सा पेचीदा यहाँ पर ड्रैगन्स के लिए, क्योंकि संदीप दलाल जैसे दिग्गज खिलाड़ी केवल 1 रन पर आउट होकर वापस पवेलियन लौटता हुआ। सुधीर सेठ इज अ न्यू बैटर। तो बिल्कुल सुधीर सेठ नए बल्लेबाज जो कि 7वें नंबर पर मैदान पर उतरते हुए। तो बिल्कुल अब यहाँ पर मामला पेचीदा होगा निश्चित तौर पर एमसीसी ड्रैगन्स के लिए, क्योंकि हौसले बिल्कुल बुलंद है। जैसे ही मनु आए अपनी गेंदबाजी में पहले ही ओवर में विकेट की सफलता उन्होंने दिलाई है अपनी टीम के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल देखना होगा कि यह किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं सुधीर सेठ, क्या कप्तान का साथ निभाते हैं। फ्लाइटर गेंद बिल्कुल यहाँ पर ड्राइव करने पर मजबूर किया। गेंद निकल चुकी है, कम से कम 2 रन मिल सकते हैं, मगर केवल 1 रन पर ही संतुष्टि प्राप्त की है सुधीर सेठ ने। नए हैं बल्लेबाज, मगर जब कभी हम नए बल्लेबाज को देखते हैं तो काफ़ी जोशीले, काफ़ी फुर्तीले, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। मगर जैसे ही एक सिंगल लिया ऐसे लगे कि काफ़ी लंबी पारी खेल चुके हैं, लगभग 60-70 रनों के। तो फिलहाल सुधीर सेठ अपना खाता खोलते हुए, मगर सुदेश राणे पर बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी कदमों का इस्तेमाल किया। गेंद हवा में बिल्कुल इनसाइड आउट का प्रयोग, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेल दिया है, बिल्कुल दोनों फील्डरों के बीचों बीच 1 रन के लिए। कुछ बड़ा शॉट लगाने की फिराक में शायद कप्तान
सुदेश राणे कदमों का इस्तेमाल जब करते हैं तो बिल्कुल दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मुर्मय दास दूर वाली छोर से गेंदबाजी में बिल्कुल इस खिलाड़ी को तो आईपीएल में होना चाहिए, जिस प्रकार से सुंदर गेंदबाजी करते हैं। पटकी हुई गेंद हल्की सी दिशाहीन होती हुई यानी कि बाहर को जाती हुई, मगर ड्राइवर सीधे कपिल के हाथों में गेंद जो कि तैनात हैं एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। फिर से एक बार एक मजबूत दीवार फील्डरों की जो कि बनाई गई है कवर्स की दिशा में। मजबूती की दीवार टूटेगी नहीं क्योंकि जेके सुपर सीमेंट से जो बनी है। फिर से एक बार यहाँ पर खेलने का प्रयास, कपिल के सुंदर फील्डिंग के बदौलत कोई रन का मौका नहीं। ओवर की समाप्ति 11 पर 5। तो छोर बदल का अब है गेंदबाजी गोविंद गांवकर की दूर वाली छोर से गेंदबाजी करेंगे, जो कि शुरुआत करेंगे 12वीं ओवर की, जबकि स्कोर 60 पर 5। अब तक आधी टीम को रवाना कर चुके हैं पवेलियन स्टैलियंस ने। इक्का दुक्का और विकेट अगर गिरती है तो निश्चित तौर पर पूरे दवा पूरे प्रेशर में आ सकती है टीम ड्रैगन्स के बीच। बिल्कुल फुल टच गेंद पर कड़ा प्रहार डीप मिड विकेट की ओर, वहां पर खिलाड़ी तैनात, केवल एक रन ही मिल पाएगा जो कि कप्तान को। कप्तान के साथ बल्लेबाजी में अब सुधीर सेठ भी। तो इन दोनों ही बल्लेबाजों को लंबे समय तक टिका रहना काफ़ी ज़रूरी, क्योंकि टीम की स्थिति को अगर सुधारना होगा तो निश्चित तौर पर दोनों को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। मगर फिलहाल फिर से एक बार हल्की सी फील्डिंग में बदलाव की कोशिश, जो कि मिड विकेट काफ़ी डीप खड़े थे उन्हें थोड़ा सा पास लाया गया है गोविंद गांवकर की ओर से गेंदबाजी में। फिर से एक बार दूर वाली छोर से ये 12वीं ओवर में गोविंद की गेंदबाजी, दिशाहीन गेंद और वाइड का इशारा, इस एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 62 रनों पर 62। और पटकी हुई गेंद बिल्कुल कलाइयों के साथ खेल दिया है, जो कि स्क्वायर लेग की ओर। वहां पर काफ़ी मेहनत करनी होगी निहाल बोरकर को। जब तक गेंद तक आते बिल्कुल केवल एक रन जो कि मिलता हुआ स्कोर को पहुंचाता हुआ 63 रनों पर दोपहर के क्षेत्र में। और एक मैच जो कि खिलाई जाएगी, तो खिलाड़ी आ रहे हैं जो कि खेलेंगे दोपहर के क्षेत्र में। बढ़िया शॉट इसे बीच कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार लोअर फुल टॉस पे खेल दिया था डीप स्क्वायर लेग की ओर, मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात पॉली काफी सुंदर फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। दो फील्डरों की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर जिन्होंने बिल्कुल बल्लेबाजों की दिल की धड़कनें रोक दी हैं, एक है कपिल आंगले जिन्होंने अब तक 3 कैचेस लिए हैं और काफ़ी सुंदर फील्डिंग की है कवर्स में, और दूसरे पॉली यानी कि पॉल फर्नांडिस, एक कैच जो कि बिल्कुल सबसे बेहतरीन इस मैच की, डाइव लगाकर सामने को गिर पड़े मगर गेंद को जाने नहीं दिया। उसके साथ साथ अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा भी पॉली की ओर से दिखाई देता हुआ। बैकफुट पर कट कर दिया इस बार फिर से एक बार कपिल, जो कि काफ़ी तेज़ी से गेंद को रोकने की कोशिश, मगर गेंद निकल चुकी है। वहाँ पर बैकअप खिलाड़ी है तैनात निहाल बोरकर उस दिशा में। तो धीरे धीरे फिर से एक बार एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए गोविंद गांवकर और मुर्मय दास उस ओवर से गेंदबाजी के क्रम में बिल्कुल सुंदर गेंदबाजी। हालांकि सुदेश राणे कप्तान अपनी निजी 23 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि नए बल्लेबाज सुधीर सेठ 3 पर बल्लेबाजी करते हुए। फ्लैटर के फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल, लॉफ्टेड शॉट जो कि लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात और एक रन का इजाफा। स्कोर पहुंचता हुआ 67 रनों पर 12 ओवर की समाप्ति, 67 रन 5 विकेट के नुकसान पर।
मुरमई दास मनु दूर वाली छो से गेंदबाजी के क्रम में आते हैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से, मगर एक अच्छे बिजनेसमैन प्रोप्राइटर, उनके ऑफिस बेंगलोर में, गोवा में, कदमों का इस्तेमाल इस बार बिल्कुल करते हुए फिर से एक बार आगे को आए कप्तान और गेंद को भेजा लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, जहां पर नेहाल बोरकर तैनात है, जिन्होंने 38 रन का योगदान दिया, सबसे हाईएस्ट। जो कि अगर बल्लेबाजी की बात करें स्टैलियंस की, तो बिल्कुल फिर से एक बार अपना जोहर दिखाते हुए, अपने आप को साबित करते हुए एक अच्छी बल्लेबाजी उनकी ओर से निश्चित तौर पर दिखाई दी। डीप लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, जो कि अक्सर गेंद उस दिशा की ओर जाती हुई जहां पर निहाल बोरकर हैं तैनात, जो कि लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फिर से एक बार एक अच्छी साझेदारी यहां पर दिखाई देती हुई लंबी पारी होनी होगी। फ्लैटर गेंद को आने दिया, इस बार स्टंपिंग और आउट, आउट बिल्कुल, हाथ आसमान की ओर इशारा, उंगली ऊपर उठती हुई, और एक विकेट का पतन होता हुआ यहां पर। ओहो, ये बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी, और इस बार अखिल लवंडे ने कोई गलती नहीं की, एक सुंदर स्टंपिंग के साथ विकेट की सफलता प्राप्त की है उन्होंने। सुधीर सेठ को किया है, सुधीर सेठ को किया है स्टंप। बिल्कुल एक शानदार पारी खेलकर वापस पवेलियन लौटे हैं। 25 रन बनाए उन्होंने और केवल 26 गेंदों में। तो मुर्मय दास को फिर से एक बार एक विकेट की सफलता यहां पर प्राप्त होती हुई। जैसे कि मैंने कहा कि बल्ले से कुछ रन नहीं बनाए हैं मुर्मय दास ने, मगर गेंदबाजी में अपना बिल्कुल दमखम लगा देंगे, और उसी बेहतरीन गेंदबाजी के साथ विकेट पर विकेट अब चटकाते जा रहे हैं मुर्मय दास लाइस मनु। शैलेश वेलिकर नए बल्लेबाज, ओ काफी नीचे को रही गेंद, सभी को चकमा देती हुई गेंद निकल पड़ी है डीप थर्ड में रीजन पर। जब तक गेंद को उठाकर थ्रो करती है, 2 रन आसानी के साथ यहां पर प्राप्त करते हुए बल्लेबाज, नए बल्लेबाज आए हैं शैलेश वेलिकर, उनके साथ सुधीर शेठ। तो देखना होगा ये जोड़ी कितनी कारीगर साबित होती है, कितनी सफल साबित होती है। हालांकि सुदेश राणे का जैसे विकेट गिरा, बिल्कुल एक बड़ा झटका लगा टीम एमसीसी ड्रैगन्स को। 13 ओवरों की समाप्ति, 70 रन, 6 विकेट के नुकसान पर।
तो गेंदबाजी में बिल्कुल थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर, और गेंदबाजी के लिए लाए गए गेंदबाज सुदीप फलदेसाई दूर वाली छोर से, जो कि शुरुआत करेंगे 14वीं ओवर की। स्कोर हुआ है 70, 6 विकेट के नुकसान पर, और उनका सामना करेंगे शैलेश। ओ बढ़िया शॉट लगाने की फिराक में यहाँ पर 2 रन मिल सकते हैं, या फिर गेंद अश्विन की पूरी कोशिश रही थी। तो सुधीर सेठ के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार चौका, जो कि अश्विन द्वारा काफ़ी कोशिश की गई थी कि गेंद को रोकें, मगर गेंद रफ्तार पकड़ती हुई काफ़ी फास्ट आउटफील्ड यहाँ पर, जो कि अब आप देख सकते हैं ग्रास पर ट्रिमिंग की गई है, तब गेंद काफ़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ती है। तो फिलहाल बैकफुट पर बिल्कुल संभल कर सुदीप फलदेसाई अच्छी गेंद के साथ एक वापसी करते हुए। बल्ले का पूरा चेहरा लाकर खेलने की कोशिश, बिल्कुल एक अच्छी कोशिश यहां पर बल्लेबाजों की ओर से फिर से एक बार जमने का प्रयास। इसी बीच 2 रन की कोशिश हो सकती है, बिल्कुल दौड़कर पूरे 2 रन पूरे करते हुए शैलेश वेर्नेकर द्वारा बिल्कुल एक अच्छा ड्राइव था, जो कि 2 रन आसानी के साथ देता हुआ बल्लेबाजों को 128 रन बनाने हैं। मुश्किल स्थिति है, मगर नामुमकिन कुछ भी नहीं। जिस प्रकार से अगर अच्छी बल्लेबाजी होगी इस मोड़ पर भी, तो पहुंच सकते हैं लक्ष्य तक। संभल कर केवल दिशा दी है स्क्वेले की ओर शैलेश वेर्नेकर, जो कि काफी अच्छा साथ निभाते हुए सुधीर सेठ का। सुधीर सेठ अपने नीचे 8 पर शैलेश अपना खाता खोल। बढ़िया अपील वहां पर, मगर कोई इशारा नहीं अंपायर का, और ये 15वीं ओवर लगभग समाप्ति की कगार पर, जबकि क्या बेहतरीन रही थी गेंदबाजी। बिल्कुल अब तक कुल मिलाकर 6 विकेट लेकर बैकफुट पर ढकेला है कदमों का इस्तेमाल। इस बार शैलेश वेर्नेकर द्वारा बड़ा बढ़िया शॉट लगाने की फिराक में फिर से हल्के से टाइमिंग पर संघर्ष करते नजर आए, और 1 रन केवल मिलेगा, जो कि स्कोर को पहुंचाएगा 79 रनों पर।
तो आखिरकार बाउंड्री है जो कि आती हुई है। और बिल्कुल बैकफुट पर फिर से एक बार सुंदर ड्राइव यहाँ पर बल्लेबाज सुधीर सेठ की ओर से। सुधीर सेठ अब पूरी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर की समाप्ति 84 पर 6। तो सुधीर सेठ 15 पर जबकि बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपना गार्ड लेते हुए अपनी मार्किंग करते हुए शैलेश वेरेकर। हालांकि यह ओवरऑल एक अच्छा सपोर्ट उनकी ओर से, एक अच्छा सहयोग, एक अच्छी साझेदारी अब दिखाई देते हुए कलाइयों का उपयोग किया है। सुंदर जब तक निहाल भोरकर गेंद को उठाकर थ्रो करते, एक रन मिल सकता है यहाँ पर बल्लेबाजों को। सुदीप फलदेसाई की गेंदबाजी जो कि राजेश गोडके पवेलियन की ओर से गेंदबाजी में है, मगर अब हालांकि कुछ तेजी यहां पर दिखानी होगी बल्लेबाजों को। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार, लोअर फुल टॉस पे गेंद को ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, जहां पर पॉल फेर्नांडिस है तैनात। 1-1, 2-2 रन बिल्कुल तेजी से अब बल्लेबाजों को लेने होंगे, वरना दबाव में आ सकते हैं बल्लेबाज, क्योंकि वक्त रहते अगर संभल जाए तो बिल्कुल एक आसान सा लक्ष्य रहेगा, फिर लक्ष्य तक पहुंचना एक आसान काम रहेगा, वरना बिल्कुल इसी को ध्यान में रखकर गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी एक लॉफ्टेड शॉट बिल्कुल खेला था, मगर गेंद सुरक्षित जो कि मैदान पर आ गिरी है। केवल 1 रन पर शैलेश वेरेकर हालांकि कोशिश पूरी कर रहे हैं, मगर कुछ बड़ा शॉट अब तक उनके बल्ले से बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। मगर अगर बात करें सुधीर सेठ की, तो निश्चित तौर पर कुछ चौके बटोरने में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी दिखाई है, तो काफ़ी कुछ निर्भर करेगा सुधीर सेठ की बल्लेबाजी पर और इस जोड़ी पर। जब तक ये दोनों खेलेंगे रन बनते रहेंगे और लक्ष्य तक बढ़ती रहेगी टीम एमसीसी ड्रैगन्स। इस बार बिल्कुल बढ़िया शॉट, वहां पर कोई मौका नहीं, गेंद रफ्तार के साथ सीमा रेखा पार जाती हुई 4 रन। हालांकि कोशिश की पैर से रोकने की, पैर
लग चुका था गेंद पर, मगर गेंद इतनी रफ्तार से और क्या खूबसूरती के साथ बिल्कुल मिड विकेट की ओर दिशा दी गई थी। 4 रन तो मिलने ही थे उस पर। सुधीर सेठ, मैंने कहा कि इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी पर बिल्कुल काफ़ी कुछ चौके नज़र आते हुए, बिल्कुल ये सही रवैया, वक्त रहते बिल्कुल कुछ बड़े शॉट्स आते हुए। फिर से एक बार कप्तान को इस्तेमाल कर इस बार बिल्कुल लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खेल दिया है। एक बढ़िया ड्राइव, मगर केवल एक ही रन देगा बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ स्कोर 93 पर पहुंचता हुआ, जबकि 16 ओवरों की समाप्ति 6 विकेट के नुकसान पर। तो बिल्कुल अब कमाल का इक्वेशन जो कि बची हुई अब 4 ओवरों में, यानी कि 24 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता। गोविंद गांवकर गेंदबाजी में जो कि शुरुआत करेंगे 17वें ओवर की, जबकि सुधीर सेठ 21 पर बल्लेबाजी करते हुए उनका साथ निभाते हुए शैलेश वेनेकर 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल फिर से एक बार होता हुआ सुधीर सेठ की ओर से, मगर कोई रन का इजाफा नहीं, कोई रन की बढ़त नहीं। तो हालांकि अब इक्वेशन उनके जहन में बिल्कुल साफ है। 23 गेंदें और 35 रन। बैकफुट पर बढ़िया शॉट और स्टंप से डिफ्लेक्ट हुई है गेंद। हालांकि सही पकड़ बनाई थी गेंद पर, मगर दिशा गलत के कारण कोई रन का इजाफा नहीं। अब 22 गेंदों में 35 रन। बढ़िया शॉट, कपिल वहां पर मौजूद मिड विकेट दिशा में, सुंदर फील्डिंग, उतना ही बढ़िया थ्रो, केवल 1 रन पर सीमित किया बल्लेबाजों को। थोड़ा सा दबाव बिल्कुल अब बढ़ता हुआ, जबकि 3 गेंदें खेल कर केवल 1 रन बना चुके हैं। और कैच का मौका हो सकता है, ये चौथी कैच होगी अगर कपिल कैच ले लेते हैं तो, मगर सुंदर फील्डिंग काफ़ी आगे की थी। मगर देखिए क्या बढ़िया फील्डिंग, तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की। अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, जब बल्लेबाजी की तो 14 रन बटोरे। अब जब फील्डिंग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जॉन टी रोड्स की याद दिलाते हुए। कपिल है नाम इनका, और फिर से एक बार बैड लक, बैकफुट पर खेल दिया। फिर से एक बार गेंद स्टंप से टकराते हुए, यानी कि जब लक आपका साथ नहीं दे रहा तो इस प्रकार की स्थिति हम देख सकते हैं मैदान पर। हालांकि बैकफुट पर फिर से एक बार सही पकड़ बनाई थी, गेंद निकली थी बल्ले की बीचों बीच से, मगर जाट टकराई है स्टंप पर और बाल बाल बच गए हैं हमारे अंपायर संदेश गांवकर। वो यहाँ पर मनकड़ करने की कोशिश, एक चेतावनी दे चुके हैं। अब दबाव चारों ओर से अब दिखाई देता हुआ बल्लेबाजों पर।
तो अब यहाँ पर मामला थोड़ा सा पेचीदा होता हुआ बल्लेबाजों के लिए। अब 32 रनों की आवश्यकता, जबकि केवल 18 गेंदों में, यानी कि 3 ओवर अभी भी बाकी। तो बची हुई 3 ओवरों में, यानी कि 18 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल अब थोड़ी सी गति बदलकर बल्लेबाजी करनी होगी, गियर बदलना होगा बल्लेबाजों को। जबकि इक्का दुक्का रन बना रहे हैं, अब 2 रन या फिर 4 रन की कोशिश करनी होगी। हर एक गेंद पर प्रहार करेंगे, अच्छा रन दौड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आसान हो सकता है लक्ष्य। तो फिलहाल बैकफुट पर खेल दिया, इस बार केवल 1 रन मिल सकता है, क्योंकि गेंद बिल्कुल पॉल फर्नांडिस के पास रोकी गई है, जो कि तैनात है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। और इसी क्षेत्र में उन्होंने एक लाजवाब, इस मैच की सबसे बेहतरीन कैच ली है पॉल फर्नांडिस। साउथ अफ्रीका के एक गेंदबाज थे पॉल एडम्स, क्या सुंदर गेंदबाजी करते हैं और बिल्कुल स्टाइल भी बिल्कुल बढ़िया उनके। और यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल कर आगे को आए और अच्छी स्टंपिंग के साथ शैलेश वेरेकर की बल्लेबाजी का सफर होता हुआ समाप्त। अगले बल्लेबाज आए हैं 9वें नंबर पर सुदेश प्रभु देसाई, जिन्होंने अपनी पहली गेंदबाजी में विकेट की सफलता दिलाई थी। मगर अब देखना होगा कि बल्लेबाजी में क्या दमखम दिखाते हैं सुदेश प्रभु देसाई। तो 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए और स्कोर को पहुंचाते हुए 98 रनों पर। अब तक कुल मिलाकर 7 विकेटें जो कि गिरी हैं, मगर यहाँ पर बिल्कुल दोनों ही बल्लेबाज एक दूसरे से कहते हुए साथ ही साथ निभाना, क्योंकि 7 विकेट गिर चुके हैं। अब 7 नहीं निभाएंगे तो अनकरीब बचे हुए 3 विकेट भी गिर जाएंगे। तो अब बिल्कुल एक गंभीर स्थिति में एमसीसी ड्रैगन्स संघर्ष करती हुई। सुदीप फलदेसाई की गेंदबाजी, बैकफुट पर कट करने की कोशिश, दिशाहीन गेंद के साथ वाइड का इशारा, वाइड की सहायता मिलते हुए और स्कोर पहुंचता हुआ 99 रनों पर। इस अतिरिक्त के साथ अभी भी 29 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए, जबकि बची हुई 14 गेंदों में 29 रन, यानी कि लगभग हर एक गेंद में अब 2 रनों की आवश्यकता। हर एक गेंद पर बढ़िया शॉट, कपिल वहां पर तैनात और सुंदर फील्डिंग के साथ, जो कि उनकी ओर से होते हुए
केवल 1 रन, 100 रन पूरे। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार, बड़ा शॉट, मगर वहां पर पॉल फर्नांडिस तैनात, क्या रोक पाएंगे? ओ इस बार उनका फुटवर्क, फुटबॉल खेलना कोई फायदा न दिया और आखिरी गेंद पर चौका लगाकर स्कोर को पहुंचा 104। 18 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 104, यानी कि अब बची हुई 12 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। तो स्वागत आप सभी का। क्या दिलचस्प मोड़ पर मैच रुकी है। 12 गेंद 24 रनों की आवश्यकता और स्टंपिंग फिर से एक बार, नो बॉल का इशारा, वहां पर नो बॉल का इशारा। नो बॉल का इशारा और फ्री हिट का मौका रहेगा, यानी कि अब 12 गेंदों में चाहिए केवल 23 रन, 23 रन ऑफ 12 बॉल्स। थोड़ा बिल्कुल मुकाबला अब दिलचस्प हो रहा है। बैकफुट पर खेल दिया है, मिड विकेट की ओर खेलने की कोशिश, मगर यहां पर अच्छा बैकअप, वहां पर मुरमई दास की गेंदबाजी काफी एग्रेसिव रवैया अपनाया है उन्होंने। अब थोड़ी सी गलती महंगी साबित हो सकती है किसी भी टीम को। हालांकि स्टैलियन बिल्कुल एक मजबूत पकड़ बना चुकी है, मगर वक्त बदलते देर नहीं लगता, जबकि एमसीसी ड्रैगन्स भी एक अच्छी कमबैक कर गेंद में वापस लौटेगी। तो तभी तो कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, कुछ भी कहना जल्दबाजी रहेगी। हालांकि अब फिलहाल स्थिति ड्रैगन्स की पेचीदा, मगर एक अच्छा कमबैक कर सकती है। 2 बड़े शॉट लगेंगे, मैच का रुख बदल सकता है। हमने कई अवसर पर देखा है इस प्रकार से मैच बदलते हुए। तो मुरमई दास की गेंदबाजी, हालांकि ये 19वीं ओवर है जारी। बैकफुट पर बढ़िया शॉट मिड विकेट की और वहां पर गेंद को रोका जाएगा। नवल नाइक की सुंदर फील्डिंग, जब तक गेंद को ताकत रोकते केवल 1 रन पर सीमित किया है बल्लेबाजों को। ये इक्का दुक्का रन से बात बनने वाली अब बिल्कुल नहीं है। कुछ अच्छे शॉट, कुछ बढ़िया ड्राइव्स करने होंगे बल्लेबाजों को, तब जाकर टारगेट अचीव किया जा सकता है, वरना पीछे रह जाएंगे ड्रैगन्स इस मैच में। हालांकि मुरमई दास को खेलना आसान नहीं, बैकफुट पर खेल दिया है, मगर सुंदर फील्डिंग अपनी गेंदबाजी पर। अभी भी 2 गेंदें आने से, यानी कि बची हुई अब 8 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता। क्या दिलचस्प मोड़ पर आई है ये मैच, लगाने होंगे बड़े शॉट्स। हालांकि पूरी ताकत झोंक रहे हैं सुदेश प्रभु देसाई, मगर कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। अब 7 गेंदों में 20।
केवल एक ही रन मिलेगा। तो आखिरी ओवर में 19 की आवश्यकता, जो कि रहेगा मुश्किल। तो मामला काफ़ी अब पेचीदा। सुदीप फल्ड से फिर से एक बार गेंदबाजी में 19 रनों की आवश्यकता। अब केवल औपचारिकता जो कि बाकी रह चुकी है इस मैच की। सुदेश प्रभु देसाई उनके साथ सुधीर से जो अपनी निजी 27 पर कर रहे हैं बल्लेबाजी। एक शानदार पारी निश्चित तौर पर खेली है उन्होंने, मगर क्या 6 गेंदों में 19 रन बनाकर एक ऐतिहासिक जीत यहां पर दर्ज करेंगे एमसीसी ड्रैगन्स? मुश्किल है, मगर मजा आएगा। डॉक्टर अंकुश पटेल की गेंदबाजी, आखिरी ओवर 19 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद पर कड़ा प्रहार, वहां पर दौड़ लगानी होगी। कपिल काफी तेजी से सुंदर फील्डिंग का मजा, 2 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। रनआउट का मौका हो सकता है। जब तक लौटे काफी देर हो चुकी थी, ट्रेन निकल चुकी थी। इस प्रकार से सुधीर सेठ आखिरकार लंबी पारी खेल अपनी निजी 27 रनों पर आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए। तो जमीर करोल बल्लेबाजी के लिए अब उतरे हैं 10वें नंबर पर, जबकि 8 विकेटें अब तक गिर चुकी हैं। काफ़ी नाराज़ अपने आप से, 2 रन के लिए दौड़ना चाहते थे, मगर कोई रिस्पांस वहां पे नहीं। जब तक सुदेश प्रभु देसाई मुड़ते तो आ चुका था। तो बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी रही है। 30 गेंदों में उन्होंने बनाए 27 रन, लगभग रन बॉल बनाए अपनी टीम के लिए। तो अब देखना होगा 5 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। 5 गेंदें 18 रन। एमसीसी स्टैलियंस पूरी तरह से मजबूत पकड़ बना चुकी है इस मैच पर, जो कि आज के दिन का पहला मैच। टॉस जीता था एमसीसी ड्रैगन्स ने, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और न्योता दिया था एमसीसी स्टैलियंस को बल्लेबाजी करें, जबकि उन्होंने 127 रन बनाए थे 120 गेंदों में।
और अब स्थिति काफ़ी मुश्किल। 5 गेंदें 18 रन एक पर, जबकि नॉन स्ट्राइकर पर सुदेश प्रभु देसाई। निहाल जो कि लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में एक मजबूत दीवार आप देख सकते हैं, गली पॉइंट डीप और एक्स्ट्रा कवर में मृणमय दास। इसी बीच बढ़िया ड्राइव, केवल 1 रन ही देगा, 2 रन की कोशिश करनी होगी, मगर लगता है केवल आते ही बिल्कुल थोड़े से लंगड़ाते हुए जमीर करोल, ये कुछ अच्छी बात नहीं है। अभी अभी आए हैं, अगर इस तरह से लंगड़ाएंगे तो फिर दौड़ेंगे कैसे, क्योंकि अभी भी 17 रन, अगर 6 रन भी मारते हैं प्रत्येक गेंद पर नहीं पहुंच पाएंगे लक्ष्य तक। तो 2 गेंदों में अब 16 रन की आवश्यकता, प्रति गेंद 8 रन बनाने होंगे, यानी कि अब बिल्कुल काफी मुश्किल स्थिति। जीत की कगार पर स्टैलियंस, ड्राइव केवल 1 रन देंगे और आखिरी गेंद पर अब 15 रन बनाने होंगे। अगर नो बॉल छक्का दो मरतबा भी लगता है तब भी मुश्किल होगा। अब केवल औपचारिकता जो क्या है बाकी, और मैच का समापन केवल 1 गेंद। तो यहाँ पर ढेर सारी शुभकामनाएं, एमसीसी स्टैलियन ने आसानी के साथ ये मैच जीत लिया है। तो कमेटी बॉक्स से बस इतना ही इस मैच के लिए। अगली मैच के लिए 2 बजे फिर से जुड़ते हैं आपके साथ, मगर तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा और हमारे साथ फिर से एक बार जुड़िएगा बिल्कुल 2 बजे आज के दोपहर के क्षेत्र में, और एक मैच जो कि खेला जाएगा। मगर अब मैं चलता हूँ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की ओर।
सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। स्पीकर ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। So requesting both the teams, Nikhil, Animasugur. So we have with us very special guest, Mr. Sanjay, prominent businessman and member MCC. He's been escorted by none other than the president of MCC, the dashing Yogesh Naik. Gentlemen, please come fast. We are missing your applauses. Put your hands together for a very special guest, Mr. Sanjay Purab, prominent businessman and member MCC. He's been escorted by none other than the president of MCC, Yogesh Naik. As is the ritual, he'll be given a token of love, a beautiful flower. Absolutely, token of appreciation, a beautiful moment from MCC, from none other than the president of MCC to a special guest, Shri Sanjay Purab sir, will be giving away the man of the match. But before that, I would like to just quickly go through the summary. Won the toss and opted to field first. Gave a good start by none other than Kapil Angle, former Ranji Goa, who played a marvelous inning of 14 runs. Unumai Das did not start well and could not score a run. Naval Naik was batting so well, a lofted shot. He was back to the pavilion, scoring just 5. Amit contributed 10 runs. He was looking good. Nihal Borkar, as usual, he's the man who steals the show, 37 balls and 38 runs. Paul Fernandes also equally contributed with 21 runs. These two batted well. They posted a target of 128 to win for MCC Dragons. But not a good start from Saish Mamre, 5 of 5 deliveries. Aditya Prabhugaonkar, 14 of 11. Amlan D'Souza could not score even a single. Sudesh Ran, the captain, contributed 25 runs of 26. Beautifully stumped by Akhil Lavande behind the stumps. Brijesh Prabhu contributed 17. Sandeep Dalal also was a bad luck. Just contributed 1 of 4. Sudhir saved 27. And because of no good contribution there from the batters, they were bundled down to 113 and were away from more 15 runs. So the man of the match with absolutely outstanding performance is none other than Dr. Ankush Patil. Put your hands together. He'll be receiving the man of the match with outstanding performance in the hands of Shri Sanjay Purab, the special guest, prominent business personality and MCC member. Ankush, overall a good performance and was always happy feeling when you contribute in both the departments. Yeah, actually I'm very happy that my innings helped my team go through. That is what is the main aim of any player in our team,
not individual performances, but with our performance, we want our team to win, and that is what helped, and that I'm very happy with that. Well done and congratulations. So purple cap, yes, definitely Amrish Patel played a marvelous inning in both the departments. Purple cap is none other than my favorite as well. He's a consistent performer. Nehal Golkar. Nehal, your name is been called. Please come for the purple cap. From our special guest, Sanjay Purab, sir, prominent business personality, MCC member, and he's here with just one call from MCC, and he is here. That only shows the true cricket love from sir. Blue cap, 4 innings and 6 wickets. Sudesh Prabhudesai. Sudesh sir, you have been called for the blue cap. So put your hands together for Sudesh Prabhudesai sir for 4 innings and 6 wickets. What a good bowling. Picked up a wicket very first over. So that's all from the presentation. Big thank you once again to Shri Sanjay Purab for his